तो उधर देखें एमआरआई स्कैन भी ज़रूरी है, क्योंकि एमआरआई स्कैन से आपको सिर्फ उससे पता लग सकता है कि लिवर और हार्ट में आयरन है या नहीं है। ठीक है, पहले वो उधर करते थे, मेरा एक दो दफ़ा हुआ है, लिवर बायोप्सी हुई हुई है चेक करने के लिए, लेकिन लिवर बायोप्सी जो है इट्स इन्वेसिव एंड इट्स वेरी पेनफुल, तो वो अब नहीं होती उधर मेरे नॉलेज में। तो मैं तो आपको अपना ही बता सकता हूँ कि जो होता है एमआरआई स्कैन होता है रेगुलरली हार्ट का और लिवर का। एक होता है T2 स्टार स्कैन दैट चेक्स द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्योंकि आयरन ओवरलोड के साथ अक्सर हार्ट फेलियर तो नहीं होता, कंजस्टिव फेलियर होता है, कंजस्टिव फेलियर होता है, तो उससे फिर अक्सर पता नहीं लगता। तो वो जो फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट है वो फिर अंदर से पता लगता है उस स्कैन के साथ। तो दूसरा जो है बोन डेंसिटी स्कैन्स, बोन डेंसिटी स्कैन्स जो हैं, क्योंकि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं आमतौर पे वो ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं, उनकी बोन्स बहुत वीक होती होंगी। आई डोंट नो इधर आपके केसेस होते हैं बोन फ्रैक्चर के या नहीं, लेकिन बोन फ्रैक्चर हिप्स के स्कैन होते हैं। बोन फ्रैक्चर के केसेस कम होते हैं। अच्छा, तो लेकिन उधर तो जो अब पहले तो जी बहुत ट्रीटमेंट्स होती थी, पमिड्रेनेट एक ड्रग है जो बोन कैंसर पेशेंट्स को भी देते हैं, उससे भी होता था। लेकिन अब उन्होंने काफ़ी हाई पोटेंसी की कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन डी शुरू की हुई है, तो उससे ये कि विटामिन डी लेवल्स जब मेंटेन हो रहे हैं उससे पता लग रहा है कि जी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है हड्डियों पे। तो here actually we see so many patients, complaining muscular pain, calf pain, back pain, because those decreased vitamin D and calcium level. But I think that here exposure to sunlight or other things might that is an important thing. Much better than That is, see, the other thing is you have to see, maybe I'm wrong, you can tell me, but if a patient is running at a pre-transfusion hemoglobin of 6, that patient will not be able to move much, and because of that there will be muscle wastage. Sure. And then when that person's HB increases and they want to run or they want to move, then it will be a difficult thing for them to move. So therefore the pains will come, the stretching will come. So like I said, I have been privileged. मैं तो privileged life मैंने गुजारी है। बचपन में स्कूल में स्पोर्ट्स भी करते थे, कराटे भी करते थे, कराटे का कहते बेल्टें भी ली हुई हैं मैंने, और अम्मी अब्बू को डर रहता था हमेशा घर में कि इसको चोट ना लग जाए। मेरे भाई को होता था कि इसको ज़्यादा आप करते हैं कि इसको चोट ना लग जाए। लेकिन ये है कि मेरे अम्मी अब्बू ने they have never made me feel any different. encourage किया आपको। they have never made me feel any different. But again it all boils down to the treatment. अगर आपकी ट्रीटमेंट ठीक है तो आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं है ही कुछ नहीं तुम्हें। तो this is what I was saying, that you are a role model for our thalassemic patient to follow, mashallah. The way you are very active, mashallah, you are doing your job, mashallah, you are active with your family. So mashallah, we will introduce you to our patients. Yeah, that's absolutely fine. This is all what I have today is, like I said, it's all thanks to God, firstly, and secondly is the treatment that I'm getting. Actually, I cannot mention enough the doctors that we have in the UK. The founding doctor in the UK, who is no longer practicing because she's retired, the founding doctor in the UK for thalassemia was a doctor called Dr. Beatrix Wonke. She was the founding figure, I would say, in the UK for the thalassemia patients, and from her we now have Dr. Farooq Shah,
another outstanding doctor in the UK, and I think through her treatment we have a lot of nurses that are very specialized. We have How many patients in the UK? And what is the percentage? oh, I don't know the statistics. There must be thousands. Thousands. There must be thousands of patients. We have a very large Pakistani community in the UK. Many of the patients are Pakistani in the UK. South Asia, India. We have some patients. We have some patients that are Indian. Most of the I don't want to say most, but there's a lot of patients from Greece, from Italy, from the Mediterranean. A lot of. If you look at the map, you will see the thalassemia map going across the Mediterranean. Yeah. So. Because initially this disease was diagnosed in the country. Yes, Australia, yes. When it was called Cooley's anemia, Yeah. it was diagnosed from that area there. Yeah, it was The way we said, we are trying our best to give the maximum treatment for these patients. We, all the staff, the directors, they try their best, and our doctors also. You are trying, but you need more. You need more. There's always room. Yes. There's always room. You are doing. I've already said that the work that's being done here, I cannot praise it enough. I mean, I am. Thank you. I was not expecting this, because when I came here 10 years ago, over 10 years ago, there was only one place here, and the treatment was not good. Not enough. Not good at all. But this place, I would say, is a world of a difference. The treatment is so good here, but there is still a need for free. There's zero charge to the patients. Yes. From the blood to the medicine. I've even seen the lab. The lab is very hygienic, they have storage facilities, they have everything. It's very nice. One thing more, we are trying to give the awareness in the society how we can prevent the prevalence of this disease. Yes. That how the people should get the screening test done before the marriage, the couples getting married. Yes. So how they can get this screen. We are providing that facility. Our motto is Thalassemia Free Pakistan. Yeah, that is our ultimate motto, to make Pakistan thalassemia free country. Because the treatment is not the solution. Yeah. Solution is that thalassemia. That is free the Pakistan. solution. That is the solution. Yes. Yeah. So, ठीक. So we are very much thankful to Mr. Waqas spending so much time for us No problem. and for our patients. No problem. And inshallah we will remain in touch in the future as well. And inshallah we are trying to approach Dr. Farasha. She is very renowned, as he's told us, doctor regarding this problem. And inshallah we will get some more guidelines from Mr. Waqas and from Dr. Farasha, inshallah, so that we can improve some more facilities and better treatment for our patient, inshallah. And we are thankful, Mr. Waqas, that he promised us to introduce our NGO in the UK. Their friends, their relatives, the community, Pakistani community, Yes, I will. the other communities. In this way, we, if we get the more finance, we are better positioned to treatment our patients in a better way. Thanks. Yes, Thanks, yes. Mr. Waqas. Thank you very much. हाँ देखें जैसे कि चीमा साहब ने कहा कि गोल तो यही है कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स पैदा ही ना हो, ठीक है, तो उसके लिए एजुकेशन चाहिए. तो यूके में, यूरोप में तो एजुकेशन होती है एंड शादी से पहले टेस्टिंग वो लाजमी कहते हैं कि टेस्टिंग करें. तो उसकी वजह से देखिए, उसके बावजूद भी पेशेंट्स पैदा हो रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ कम है निस्बतन कम है. तो दिस इज़ द मेन थिंग कि लोगों की एजुकेशन जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. पाकिस्तान के यूथ को तो एक ही मैसेज है जी कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट आप ज़रूर करवाएं. ये इधर नूर थैलेसीमिया सेंटर में इन्होंने मुझे बताया है कि फ़्री टेस्टिंग होती है जी, आप ज़रूर टेस्ट कराएं.
अक्सर लोगों से मैं कहता हूँ, मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं नहीं जी टेस्ट में तो वो तो खून ले लेंगे हमारा, वो ये कर लेंगे। तो ये एक छोटा टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है, बट इट विल सेव द लाइफ of your future generations and your life, because अगर आपके घर में थैलेसीमिया है तो आपको भी थैलेसीमिया है, सिंपल बात है।